Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My dear students of class 6, subject is science. Today we will continue our topic, the living organisms and their surroundings, with a subtopic, habitat and adaptation. Yesterday we discussed what is habitat, what is adaptation, and I gave you some examples of habitat and adaptation. I give the examples of camel and fish in adaptation and in habitat, which makes the types of habitat, terrestrial habitat, and aquatic habitat, In terrestrial habitat, I gave you the example of camel who lives in deserts without water, because he is adapted in such a way that he can live in desert. And in aquatic, I gave you example of fish who lives in fish, because fish is adapted in such a way that fish can survive in water. Today I will give you some more examples of terrestrial habitat. What is terrestrial habitat? Firstly, I will give you a definition of terrestrial habitat. The plants and animals that live on land and said to live in land and adapt themselves in such a way that it is called terrestrial habitat. Animals and plants that live in land is called, so their habitat is land, that live in different places in land, and that is called terrestrial habitat. So examples of I gave you yesterday the example of camel who live in desert, and now I will give you some more examples. The desert animals like rats and snakes, these are also called desert animals. These do not have long legs that the camel has. To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand. So ये रेत में होल्स बनाते हैं, रेत में बहुत डीप होल्स बनाते हैं, जिसमें ये फिर जिनको बरोज कहते हैं, जिसमें ये रहते हैं in order to protect themselves from heat. These animals come out only during the night when it is cooler. और रात में ये निकलते हैं बाहर उन बरोज से, जब थोड़ी ठंडी पड़ती है रात में तो ये बाहर निकलते हैं. So and some examples of plants in terrestrial habitat. प्लांट्स जो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में होते हैं, जो डेजर्ट में होते हैं, वो भी ऐसे अडाप्ट हो चुके होते हैं कि वो उस इंटेंस हीट में रह पाते हैं. दे हैव अ वेरी लिटिल, ये उनको ट्रांसपरेशन बहुत कम वो ट्रांसपरेशन करते हैं. सो उनमें जो वाटर है वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलता है. डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपरेशन. एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट प्लांट इज कैक्टस. Cactus is a desert plant. Its leaves are either absent or very small and in the shape of spines. This helps in reducing loss of water from the leaves through transpiration. The leaf-like structure in the cactus, it is actually a stem. जो cactus का leaf होता है वो actually stem होता है, और वो leaf उसमें spines होते हैं, तो उसमें वो transpiration कम करता है और water reduce भी कम उसमें होता है. The stem is also covered with a thick waxy layer which helps to retain water. और कैक्टस के स्टम में एक लेयर से वो उसमें एक लेयर होती है जो वैक्सी होती है, वो भी उसमें वाटर जो है वो स्टोर कर पाता है, तो उसमें ज़्यादा वाटर लूज नहीं होता, तो वो इस रेगिस्तान में डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है. मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स. दे गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर absorbing water. So plants and animals which live in terrestrial habitats
और कैमल मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कैमल के बारे में। उसको ज़्यादा ये लंबी लेग्स होती हैं जो उसको इंटेंस हीट से बचाता है। उसमें हम्प होता है जिसमें वो स्टोर कर पाता है वाटर। और इसमें और एनिमल्स लाइक रैट्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, वो बरोज में रहते हैं दिन में और रात को वो फिर बाहर निकलते हैं। एंड प्लांट्स में कैक्टस की एग्जांपल दी, उसमें स्पाइन्स लाइक लीव्स होते हैं और ट्रांसपरेशन कम होती है। और ये वैक्सीलियर होती है स्टेम में जो उसको वाटर रिटर्न करने में मदद देता है। और मोस्टली उनमें रूट्स होते हैं जो डीप इनटू द सॉइल जाते हैं और एब्जॉर्ब वाटर करते हैं। सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टुमारो वी विल रीड समथिंग अबाउट this aquatic habitat. So this is all for today. Thank you very much.